Anyone is welcome to. Simple umbrella machine we have, ma'am. Umbrella machine. Anybody else? Do you know what is the type of the machine that you have? Do you know what type of machine you have? No? Okay. So the machines that most commonly we see around us, the machines that we uh, have at home or we see in the industry very commonly or at a tailoring shop, is called a single needle lock stitch machine. It is also abbreviated as SNLS. S for single, N needle, lock, L lock stitch. So it's called a SNLS machine or a single needle lock stitch machine, and it is very commonly used in every domestic household or a boutique or any garment factories. Of course, there are a number of industries which will have some associated machines with it, which will comprise of overlock or which will comprise of flat lock machines. But single needle lock stitch machine is the basic machine, which is a machine that everybody will have. And in this session, we will mostly talk about the industrial sewing machine. There are, of course, those hand run sewing machines which are there, but we will essentially talk about the industrial sewing machine. Whenever we are talking about any machine, I'll come to these types in a bit, but whenever we are talking about sewing machine, there is always at a very bare minimum of two threads that we are talking about. There is one thread which comes from the top through the needle, and there is another thread which is there in comes from the bobbin, and it's called the and it comes from below. It is the bobbin thread. So I think everybody here have used a bobbin and a bobbin case, so you know where the bobbin is. So so that is how the stitches are being made. And as we would move ahead, I'll of course talk about the technical terminologies and used in the stitch. Sorry. So, starting with the types of machines, we have basic three types. The first one is a hand operated machine, which few of you might have, but then it is kind of obsolete now. But your grandmothers or mothers, you might have seen them stitching in those machines. जहाँ पे the wheel would have been run by hand. You have to turn the hand like this, and that's how the balance wheel would run, and the needle will go up and down. I hope everybody has seen this machine. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. The next is a treadle machine. A treadle machine is something which very commonly is used by tailors. You will see that in most of the tailoring shop, the machine is on a table, and there is a pedal at the bottom, wherein the operator constantly presses back and forth the treadle, and the needle again goes up and down. So again, there is no hand movement here, but the feet is being moved over and over again, right? And finally, we have an electric or a motorized machine, which again can be domestic, can be an industrial one. So the basic idea of an electric or a motorized machine is wherein there is a pedal, and the more pressure you would put on it, the faster it will move. Yes. Most of your machines like Singer or Umbrella for that matter has this motorized machine. In the industrial context, we have machines like brands like Juki or Brother who makes this motorized machine. I hope you have heard of this brands. Yes, ma'am. Yes. Okay. So let's come to the parts of sewing machine. Now I am showing you one image. If you can see it here on the right, I'm showing you the image of the most commonly used, the domestic uh, motorized machine. However, and I'll also talk about the basic differences with the industrial machines that are there. But whenever we are talking about a motorized machine, these parts will always be there. I'm pretty sure you know about these parts, but maybe not the exact technical terms of it. So let's start with the machine itself. So the machine will also come with a table and a stand, but then let's start with the machine itself. The machine comprises of four parts. The first part, please follow the pointer in my on the screen. So the first part is the upright part. So the upright part is this one, the one which
stand straight is the upright part. Then is the arm. This is the arm part. Then is the face part. This part is called the face part. And here is the bed, right? So let's see each one of the parts one by one and how, you know, what are the components of each of the parts. So we'll start with the upright. The first part that we see here is the balance wheel. This is the balance wheel. In an industrial machine, we will always have a foot pedal on which we press. Uh, we give pressure, and the more pressure we give, the faster the balance wheel rotates. Now, in a handheld, hand-operated machine, this balance wheel was supposed to be rotated manually, but nowadays we do not use those things, right? Next, we have something called this one. This is called a stitch length regulator. So it comes like a circular knob. In a in different machine, it can, you know, in industrial machines, you might see there are buttons and, you know, computerized input systems wherein we define this stitch length regulator. What does it exactly mean, this length? Or can anybody tell me anything that you understand? So this session I am going to start with this, we are going to conduct this session with the understanding that because everybody has a machine, you have basic understandings of a lot of things. So let hear from you. What do you understand? आपको क्या पता है स्टिच लेंथ रेगुलेटर से क्या होता है? एनीबडी? आप लोगों ने मशीन चलाया होगा, आपके मशीन में ये नॉब होगा भी जिससे आप टर्न कर सकते हो एंड व्हाट यू कॉल दैट अ स्टिच लेंथ रेगुलेटर. उससे क्या होता है? किसी को पता है? नहीं पता है तो वो भी आप बता सकते हो. मैम हमारे जब हम फैब्रिक को सीलते हैं जो स्टिचेस की लेंथ होती है वो इससे कम ज्यादा होती है. कम ज़्यादा होती है, ठीक है. अगर हम कम ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी? आप बता मैम सकते. कम करते हैं तो स्टिचेस जो है बिल्कुल छोटे छोटे और बारीक बारीक आते हैं और हाँ. जब बड़ा करते हैं तो बड़े बड़े स्टिचेस आते हैं जो इजीली हम उसको निकाल भी सकते हैं जो मतलब जिनकी लेंथ बड़ी होती है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो एग्जैक्टली वही होता है स्टिच लेंथ रेगुलेटर से, बट एक चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे. स्टिच लेंथ रेगुलेटर से ऑफ कोर्स आपने बात तो सही करी कि छोटे छोटे स्टिचेस आएंगे या बड़े बड़े स्टिचेस आएंगे, बट ये होता कैसे है? इसका मतलब ये है, जब छोटे छोटे स्टिचेस आएंगे इसका मतलब आपका जो फैब्रिक है वो जल्दी मूव कर रहा है, हेंस छोटे छोटे आ रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. जितने बड़े बड़े आएंगे मतलब फैब्रिक धीरे धीरे मूव कर रहा है, इसलिए बड़े बड़े निडल ऊपर नीचे थोड़ा टाइम लग रहा है ऊपर नीचे होने में, ठीक है? इसीलिए फैब्रिक में वो बड़े बड़े स्टिचेस आ रहे हैं, ठीक है? तो हम इस पे हम थोड़ी देर में और बात करने वाले हैं. वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट स्टिच लेंथ एंड स्टिच पर इंच के बारे में हम बात करेंगे. So ठीक है, this is the stitch regulator. Next we have something which is called a reverse lever. इससे क्या होता है? रिवर्स स्टिच होता है. आप इस पे अगर प्रेस करके, ये एक लीवर होता है जिसको आप प्रेस करके रखोगे एंड पेडल पे प्रेशर डालोगे, what will happen that the fabric will move on the other direction. ऐसे सीधा फैब्रिक मूव कर रहा था, रिवर्स लेवर से फैब्रिक पीछे की तरफ मूव करेगा, तो आपका स्टिच के एंड में वो थोड़ा लॉक हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारा? आर्म पार्ट. आर्म पार्ट में दो तीन चीज़ें होती है, जिसमें एक है हमारा एक ऑयल गाइड होता है. यहाँ पे हमें ऑयल गाइड दिख नहीं रहा है, बट इंडस्ट्रियल मशीन्स में बहुत अच्छे से हमें ऑयल गाइड्स दिखता है, जहाँ पे जिसका बेसिक मतलब ये है कि हमें पता रहता है कि कितना ऑयल है मशीन में और वो मिनिमम लेवल से कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए. नेक्स्ट हमें एक, दिस इज व्हाट द स्पूल पिन इज. यहाँ पे हम थ्रेड का जो हमारा रील होता है, स्पूल होता है, हम उसको डालते हैं, followed by a thread guide. You see there is a guide here. एक छोटा सा होल जैसा मेटेलिक एक स्ट्रिप रहता है जिसमें एक छोटा सा होल बना हुआ रहता है, और उसको हम थ्रेड गाइड बोलते हैं. थ्रेड गाइड दो तीन जगह पे होता है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा. दो तीन जगह पे हमारे थ्रेड गाइड्स होंगे, और जब आप मशीन को थ्रेडिंग करोगे, यू हैव टू एंश्योर दैट वी आर फॉलोइंग द थ्रेड गाइड एंड द सीक्वेंस ऑफ द थ्रेड गाइड, ठीक है?
नेक्स्ट इज द फेस। फेस में क्या क्या है? पहला तो हमारा ये थ्रेड टेकअप है। इससे क्या होता है, इससे थ्रेड को मशीन के वहाँ से जो हमारा निडल का जो थ्रेड है वो उसको पुल करता है। जैसे सो वी यूज दैट एज अ थ्रेड, यूज इट टू so that the machine moves properly, right? uh, so it's basically it has a small wire spring sort of mechanism at the behind, and has some tension discs, so it essentially ensures that the the tension in the needle thread is balanced. Okay. Next we also have certain tension screws. एक needle bar होता है जो जिसके ऊपर हमारा needle लगता है. So right here there is a needle bar जिसमें एक screw लगा हुआ रहता है. आप उसको खोलते हो और उसमें आप needle insert करते हो. Right. There will also be certain regulators which will also include the pressure. पहला तो हमारा एक pressure foot है जो कि ऐसे फ्लैट सा होता है जो फैब्रिक को होल्ड करता है मशीन में, सो दैट व्हेन यू स्टिच इट द फैब्रिक डजंट मूव इधर उधर, राइट? एंड द प्रेशर फुट का प्रेशर को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइटली उसको होल्ड करना है और कितना लूज उसको होल्ड करना है ना. ये टाइट और लूज हमें क्यों चाहिए? कैन एनीबॉडी टेल मी? प्रेशर फुट का जो प्रेशर है इसको हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है. यस मैम, कई बार जब हमारा फैब्रिक बहुत ज्यादा मोटा होता है तो उसको लूज करना पड़ता है, तो करेक्ट. ताकि फैब्रिक इज। बिल्कुल, तो जितने फैब्रिक मोटे होंगे उतना हमें उसको लूज़ रखना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर हम लूज़ नहीं रखेंगे तो प्रेशर फुट का दाग हो जाएगा और फैब्रिक घिस जाएगा, फैब्रिक पे मार्क्स आ जाएंगे, राइट? वी ऑल्सो हैव अ प्रेशर फुट लिफ्टर एट द बैक. यहाँ से आप उसको हाथ से उठा सकते हो. इट्स जनरली अ हैंड लिफ्टिंग, फिंगर लिफ्टिंग प्रेशर फुट लिफ्टर. In the bed, we generally have a feed dog. A feed dog is basically a zigzag, a plate which turns, and it moves the fabric in the front. जैसे वो ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है और फैब्रिक में वो इंसर्ट होके फैब्रिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहता है. ठीक है. वी ऑल्सो हैव दिस थ्रोट प्लेट. ये मेटालिक जो प्लेट आप देख रहे हो जस्ट बिलो द निडल, प्रेशर फुट के नीचे जिसको बोलते हैं, इसको हम थ्रोट प्लेट बोलते हैं. एंड ऑफ कोर्स दिस एंटायर बेड इज कॉल्ड द बेड ऑफ द फैब्रिक. ये बेड हमारे मोस्ट सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन्स में स्ट्रेट आता है, ऐसे लाइक अ फ्लैट बेड जैसे आता है. बट देन देर आर सर्टेन मशीन जिसमें ये सिलेंडर होता है. जैसे मान लीजिए अगर मुझे ट्राउज़र का हेम सिलना है, ठीक है, ट्राउज़र का बॉटम हेम सिलना है, तो वो तो ऐसे टर्न होगा, राउंड है. या स्लीव का हेम सिलना है, वैसे केसेस के लिए हमारे पास सिलेंड्रिकल बेड भी होते हैं. ठीक है. इसके अलावा ऑफ कोर्स वी कैन हैव अ टेबल ऑन विच दिस मशीन इज केप्ट, एंड the stand which is there. We will also have certain other parts like the bobbin, sorry, like the bobbin or the bobbin case. There will also be a bobbin compartment here. There is also a bobbin winder जिसमें आप bobbin को डालते हैं और जिसमें आप जिसको आप move करके you ensure the entire bobbin is being winded up. And this is of course the foot pedal which is an extension. I hope this is clear to everybody. यस मैम। Yes, I hope most of you already knew about this. But what is the difference? How many of you have worked with an industrial machine? If I can have a idea, or everybody has a domestic machine only. किसी ने जुकी या ब्रदर पे काम किया है? नो मैम, काम नहीं किया है। ओके, देखा है, किया है. ओके. बाकी आप लोगों ने जिन लोगों ने काम नहीं किया है, have you seen this machine? Can you please put yourself on mute? Yes. Have you seen this machine? People who have not worked on this machine, have you seen this machine? यस मैम। ठीक है. तो आपने तो क्या-क्या चीज़ें हमारे डिफरेंट होते हैं देन अ डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन. दो मोस्ट चीज़ें हमारी सेम है. ठीक है. तो हमारे बैलेंस रीड, स्टिच लेंथ रेगुलेटर, ये सारी चीज़ें, थ्रेड गाइड्स, ये सारी चीज़ें हमारे सेम होते हैं. अलग क्या होता है? एक हमारा बैक टैक लीवर होता है विच इज़ वेरी डिफरेंट दैन, सो इट इज़ अ वाइडर बैक टैक लीवर. वी ऑल्सो हमारा निडल का जो हम हाथ से जो उठाते हैं डोमेस्टिक मशीन्स में, in industrial machines we have a
lifter from knee, so we can just press left and our left knee a little left, and the knee sorry, the needle goes up. There is also a very clear oil window. uh, the eyelets in our domestic machines are generally one, because we are essentially talking about single needle machines. In industrial machine we will have multiple threads, so of course there will be multiple thread eyelets. The foot treadle is different. Of course, it is in the stand itself. The bobbin and winder will also be different. Now, coming to the sewing needles. Again, because most of you have worked mostly on domestic machines, so I'm assuming the needle that you use. What is the needle that you use? Can anybody tell me what is the needle that you use? Yes, no. तो बता सकते हैं, पता है आपको, आप जो निडल यूज़ करते हो वो कौन सा निडल है, या आप बस अ, आप उषा के लिए निडल चाहिए ऐसे करके खरीदते हो? ऑर्गन कंपनी नीडल। ओके, सो निडल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। बट पहले समझते हैं निडल का पर्पस क्या है। निडल का पर्पस ये है दैट वी आर पेनिट्रेटिंग द मटेरियल विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इट। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इट मीन्स कि अगर कल हमने जैसे देखा वॉर्प, फैब्रिक के वॉर्प होते हैं एंड वेफ्ट होते हैं। अ, हम हमारा इंटेंशन ये होगा कि व्हेन वी स्टिच और निडल गोस बिटवीन द इन बिटवीन द थ्रेड्स, वो ऐसा ना हो कि वो कोई एक तो yarn को डैमेज ही कर दे। Our the thread should pass through it, create a hole, and it should pass through it, and minimum जितना कम हो सके हम फैब्रिक को उतना कम डैमेज करेंगे एंड करके स्टिच करेंगे, राइट। So let us look at the structure of the needle. ठीक है, again this is the needle that you guys must be using. Yes, आप लोग यही वाला needle use करते हो, यस मैम। ठीक है। नंबर्स में। नंबर्स रहता है उसमें। इसके थोड़ा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और इसके पार्ट्स को, किस पार्ट को क्या बोलते हैं थोड़ा समझते हैं। थोड़ा छोटू सा होता है, इक्तू सा होता है, तो आई एम प्रिटी श्योर इतने माइन्यूटली आप लोगों ने देखा नहीं होगा इससे पहले। बट लेट्स लुक एट इट। द फर्स्ट पार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट इट्स कॉल्ड द बट। ऐसा एक राउंडेड पार्ट होता है, दिस कॉल्ड द बट ऑफ द निडल। इट लुक्स लाइक अ पिरामिड। Next comes a long part जो कि which is inserted inside the needle bar and tightened with a screw. This part is called the shank of the needle. Next एक part आता है जो कि taper down होता है, ऐसे थोड़ा सा करके ऐसे पतला होने लगता है। इस part को हम बोलते हैं shoulder. Next is this part, this long part is called the blade. This is where the fabric is, इतना fabric needle अंदर घुसता है तो ये पूरा part fabric को काटता है, hence this is called the blade. A blade के अंदर there are multiple parts. First is this long part which is called a long groove, and ये जस्ट आई से पहले जहाँ से आपका थ्रेड जाता है, दिस थ्रेड जहाँ से जाता है उसको हम आई बोलते हैं। उससे जस्ट पहले एक और छोटा सा रहता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट ग्रूव। If you turn the needle around, so the image on the top is the front view of the needle, the image on the bottom is the back view of the needle. If you turn it around, this is called the scarf of the needle. Just आपके short groove के opposite side में what we have is called a scarf of the needle. Finally, we have the end of the needle, which we call as a point. Now, this point, the shape of the point can be different for different fabrics. As we move in the next slides, I'll show you. And the एकदम end of it, एकदम end of the point is called the tip. ठीक है, टिप इज द पार्ट जहाँ से आपका निडल फैब्रिक को पियर्स करता है, ठीक है। नाउ व्हेन आई से निडल साइजिंग, हाउ इज निडल साइजिंग डन? निडल साइजिंग बेसिकली क्या होता है कि आप निडल का डायमीटर लेते हो। सो यहाँ पे दिस इज द ब्लेड, दिस इज वेयर द शॉर्ट ग्रूव, एंड यू कैन सी ये पूरा ब्लेड का इतना से इतना तक डायमीटर इज सेम, है ना। यहाँ से जहाँ से ब्लेड स्टार्ट, शोल्डर जहाँ खत्म हो रहा है, जहाँ से ब्लेड स्टार्ट हो रहा है टिल शॉर्ट ग्रूव के ऊपर तक, इसका डायमीटर सेम रहना चाहिए।
यस, नो, Yes, ma'am. यस। तो कहीं पे भी जब हम डायमीटर लेते हैं, वही हमारा नीडल का साइज डिफाइन करता है। अब उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो भी डायमीटर आया, जितना भी डायमीटर आया वहाँ पे, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसको हम एन बोल के, ठीक है, नंबर मेट्रिक बोल के हम उसको नोमेनक्लेचर करते हैं। सो बेसिकली अगर डायमीटर है 0.9 mm, नीडल का साइज हो जाएगा NM90, ठीक है। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डिफाइनिंग द नीडल साइजिंग। हाउएवर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है नीडल्स के, जैसे सिंगर का नीडल आता है या अलग अलग कंपनीज के नीडल आते हैं। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट साइजिंग of the needle as I would show you। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, निडल मशीन निडल साइज, ये सिंगर के साइजेस है। इसमें आप 90 या 100 नहीं देख रहे हो। व्हाट दे डू इज दैट दे गिव अ नंबर टू दिस एज अ कोड एंड देन दे डू द डिटेल कैलकुलेशन ऑफ इट। सो अलग अलग कंपनी का अलग अलग हो जाता है। सही निडल साइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज अगर हम निडल साइज बहुत पतला ले लेंगे, इफ द निडल इज वे टू फाइन, then the thread will pass through and it will not be a very tight stitch। आपका जो स्टिच होगा वो बहुत वीक सीम बनेगा, बहुत जल्दी फट जाएगा। अगर हमारा निडल बहुत मोटा हो जाता है तो फैब्रिक कट जाएगा, फैब्रिक डैमेज हो जाएगा और फैब्रिक जो जो अगेन सीम जो हमारे बनेंगे वो टूटने लगेंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हम सही साइज का निडल चूज करें डिपेंडिंग ऑन व्हाट फैब्रिक वी आर यूजिंग और व्हाट काइंड ऑफ सीम वी आर मेकिंग, ठीक है। सो अभी मैं क्या बोल रही थी, ये पॉइंट जो है हमारा, ये डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। सो मैंने इसे डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स आते हैं। दो बेसिक टाइप होता है हमारा, एक हमारा क्लोथ पॉइंट होता है, एक हमारा कटिंग पॉइंट होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? क्लोथ पॉइंट हमारा एसेंशियली फैब्रिक के लिए होता है। कोई भी टेक्सटाइल मटेरियल जो हमारे है, वूवन हो, नेट हो, उसमें हम क्लोथ पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। अब क्लोथ पॉइंट में भी दो तीन टाइप हो सकता है। वी कैन हैव राउंड पॉइंट्स और बॉल पॉइंट्स। नाउ लेट मी जस्ट, कटिंग पॉइंट में मैं अभी आ रही हूँ, बट look at it, can you see all the points are different of all the different needles, Yes, यस ma'am. मैम। right? So इस जो आपके पास मोस्ट, आप लोगों के पास जो होंगे वो ये वाला होगा, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल। थोड़ा सा राउंडेड टिप होता है टॉप में एंड मोस्ट वोवन फैब्रिक में या सिंथेटिक फैब्रिक्स में हमारे ये यूजेबल हो जाता है। हाउएवर हमें अगर निट्स स्टिच करना है, निट्स मतलब जैसे आपके टी शर्ट्स हो गए, हुडीज हो गए, वैसे फैब्रिक्स अगर आपको स्टिच करना है, तब हमें बॉल पॉइंट चाहिए होता है। बॉल पॉइंट हमें क्या करता है? बॉल पॉइंट हमें इंश्योर करता है कि वो फैब्रिक फटे नहीं। वो बस यार्न को ऐसे मूव कर देता है और यार्न के बीच में से चला जाता है, वो फैब्रिक को थोड़ा सा भी नहीं काटता, ठीक है। उसको हम बॉल पॉइंट बोलते हैं ना। ये वाई इज दिस सो इम्पोर्टेंट? दिस इज इम्पोर्टेंट because if we do not use a ballpoint uh, needle for jerseys, it's a single yarn which is knitted over and over again। अगर वो yarn एक जगह के पे भी कट गया, वो धीरे धीरे वो फटता रहेगा। It will create a hole and gradually the hole will become bigger and bigger। Next we have a stretch। अगेन फैब्रिक्स जो कि बहुत स्ट्रेचेबल है, जैसे हमारे स्पैंडेक्स वाले, जो जैसे लेगिंग्स हो गए आपके या अंडरवेयर्स हो गए, वैसे केसेस के लिए वी यूज दिस स्ट्रेच निडल। इसमें क्या है, इसमें देखो ये थोड़ा सा, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आपका जो पॉइंट है ये सिर्फ स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा हम्प्ड है। कैन यू सी दिस शेप? Yes, ma'am. यस मैम। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेच निडल। जीन्स या डेनिम या फॉर दैट मैटर कैनवस में भी अगर हमें स्टिच करना है तो हमें थोड़ा शार्प नीडल चाहिए होता है, जो कि हमारे फैब्रिक को थोड़ा पियर्स कर पाए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यू नो दिस, यहाँ से हमारा ये जो नीचे के जो चार है, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स व्हाट कम्स इज द कटिंग पॉइंट नीडल।
ठीक है, कटिंग पॉइंट निडल में देखो ये चार्ट जो है, कैन यू सी हाउ जी शार्प टेप देयर। गला नाप इसका गला सही को नहीं आवे देख लीजिए प्लीज म्यूट आग तो योरसेल्फ। आग तो दिखे भी सके Can you please mute yourself if you are talking? Please don't distract the rest of the class. Okay, if you see the bottom four needles, these are very sharp. So essentially क्या होता है, ये हर एक needle जो है हमारा, ये these are done so that it can pierce the fabric and cut the fabric and go inside. Like ये कहाँ यूज़ होता है, ये जैसे मैंने आपको कहा जीन्स डेनिम या कैनवस में यूज़ होता है। क्विल्टिंग क्या है, आई थिंक अगेन अ लॉट ऑफ यू हैव सीन क्विल्टिंग। क्विल्टिंग हमारे बहुत सारे यू नो जैकेट्स के अंदर होता है, जहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ फैब्रिक को हम ऐसे जोड़ के एक साथ रखने के लिए ऐसे क्रिस क्रॉस स्टिचेस करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्विल्टिंग बोलते हैं। सो वैसे केसेस में, या लेदर, लेदर तो आप ऐसे नहीं स्टिच कर सकते हो। लेदर में यू हैव टू क्रिएट सर्टेन होल्ड्स टू स्टिच द फैब्रिक। सो अगेन लेदर हो गया, या रेक्सीन हो गया, हमारे स्वेड हो गए, वैसे केसेस में वी हैव टू यूज दिस कटिंग पॉइंट टूल्स। Is this clear to this part clear to everybody? यस Yes, मैम ma'am. It's clear. Okay. So basically, whenever we are talking about needles, it is very evident, हमारे इस स्लाइड से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जैसा फैब्रिक होगा, क्या फैब्रिक है हमारा, that will decide कि what needle to be used. Essentially, the kind of yarns in the fabric, warp yarn या वेफ्ट yarn हमारा कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एवरीथिंग will decide किस साइज का needle हमें यूज करना है. Finer the yarn, the finer will be the needle. The finer will be the thread too. जिससे आप स्टिच करोगे वो थ्रेड भी हमें उतना फाइन लेना पड़ेगा. Also the type of the fabric will also decide the point. And so now here you can see for the sheer fabrics जो कि almost transparent दिखता है, organdy, organza, net, voile, chiffon, ये सारे फैब्रिक में हमारे निडल साइजेस कम है. जैसे फैब्रिक्स भारी होता जा रहा है, कॉटन हो गया, टफेटा क्रेप जैसे और भारी हो गया, कॉर्डरॉय लिनेन और भारी हो गया, डेनिम, जैसे जितना भारी होता रहेगा उतना हमारे निडल साइजेस बढ़ते रहेंगे. ये क्लियर है? मैं ये वाले कॉलम में अभी आई नहीं हूँ, ये तो कॉलम क्लियर है हमारा. Yes, ma'am. हाँ, एसपीआई क्या होता है? एसपीआई का फुल फॉर्म है स्टिच पर इंच. ठीक है, स्टिच पर इंच, स्टिचेस पर इंच बेसिकली क्या है? स्टिचेस पर इंच, जो कि जैसे आप लोगों ने अभी किसी ने बताया थोड़ी देर पहले, हमारे स्टिच रेगुलेटर से हम डिफाइन करते हैं कि कितने स्टिचेस स्टिचेस का लेंथ कितना बड़ा होगा, कितने बड़े बड़े स्टिचेस होंगे या बारीक बारीक स्टिचेस होंगे. तो अगर हम मेजर करने जाए 1 इंच ऑफ फैब्रिक को, 1 इंच ऑफ स्टिच लाइन को अगर हम मेजर करें, जितना बारीक हमारा स्टिच होगा 1 इंच में उतने ज़्यादा स्टिचेस आएंगे. यस मैम जितने बड़े स्टिचेस होंगे 1 इंच में उतने कम स्टिचेस आएंगे, Yes, ma'am. है ना. अब जितना पतला फैब्रिक होगा उतने हमें ज़्यादा स्टिचेस करने चाहिए. क्यों? क्योंकि उतने बारीक स्टिचेस करने चाहिए, क्योंकि वो टाइटली उस फैब्रिक को पकड़ेगा. जितना मोटा फैब्रिक है हम कम स्टिचेस भी कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि निकल जाएगा, घुसेगा, अंदर घुसेगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो उसमें उसमें वो स्पीड से वो चल नहीं पाएगा. हेंस हमारे स्टिचेस कम हो जाएंगे, हेंस हमारा एसपीआई कम हो जाएगा, स्टिच का लेंथ बढ़ जाएगा, एसपीआई कम हो जाएगा. ठीक है, सो वही यहाँ पे बताया जा रहा है. इफ यू सी, पतले फैब्रिक में एसपीआई ज़्यादा है, जितना फैब्रिक भारी होता जाएगा वो एसपीआई धीरे धीरे बढ़ता रहेगा. ठीक है, यस मैम एसपीआई क्लियर हुआ सबको? यस Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Now, let's look at the stitch formation. This is a diagram of 5 steps जिससे हमारे स्टिचेस बनते हैं. कैसे कैसे बनते हैं? पहला स्टेप क्या है? नीडल अंदर जा रहा है. ठीक है, जैसे नीडल अंदर जा रहा है, द अपर थ्रेड गोज डाउन. ये ब्लू वाला हमारा अपर थ्रेड है, ये धीरे धीरे अंदर आ रहा है बॉबिन एरिया में.
जैसे बॉबिन एरिया में पॉइंट नंबर 2 में क्या हो रहा है, जैसे बॉबिन एरिया में आ रहा है, बॉबिन के इस शटल हुक के अराउंड ये एक लूप बना रहा है, धीरे धीरे एक लूप बना रहा है एंड यहाँ पे वो पूरा लूप बन गया। ठीक है, जैसे लूप बन गया ये हुक इसके अंदर से निकल के एक बॉबिन थ्रेड को निकालेगा, तो ये रेड वाला हमारा बॉबिन थ्रेड है और इसमें इसको फंसा देगा। सो कैन यू सी यहाँ पे रेड एंड ब्लू वाला थ्रेड फंस गया पॉइंट नंबर 5 में। यस मैम। एंड जैसे ही ये फंस गया ये एक स्टिच फॉर्म हो गया। तो बेसिकली फंसने का मतलब क्या हुआ, लॉक हो गया और एक लॉक स्टिच फॉर्म। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट, आई एम जस्ट escaping the so let me just show you from your study material a part of it, which I think is something that you already know, hence I think we can skip that part. Is something which is called a, share it. Can you see this? Yes, ma'am. So this part is basically called setting up a sewing machine, which I think abhi, most of you, because already have a machine, I understand ke you possibly already know about it. So let me just very quickly go through this. So basically हम needle mount कर रहे हैं, thread डाल रहे हैं, bobbin prepare कर रहे हैं, and all these things is the steps through which we are generally creating this setup. Now, ऑल द माउंटिंग ऑफ द निडल हम हमें कैसा करना है या थ्रेडिंग ऑफ द निडल कैसे करना है, बिकॉज आप लोग ये सारी चीज़ें ऑलरेडी काम कर चुके हो. So I think you already know it. Does anybody want me to talk about it? If anybody wants to talk me to talk about it, then we can do that. नो मैम। You know this, right? So let us skip in that case. We go back to our presentation. So essentially हम जब टेंशन के बारे में बात करते हैं, थ्रेड टेंशन के बारे में बात करते हैं और स्टिच टेंशन के बारे में बात करते हैं, there are basically two types. Either we have a balanced tension or you have an unbalanced tension. What is unbalanced tension? A balanced tension essentially means कि आपका needle के थ्रेड का टेंशन एंड आपके बॉबिन के थ्रेड का टेंशन दोनों इक्वल है, बैलेंस्ड है एंड आपके स्टिचेस नॉट प्रॉपरली फॉर्म कर रहे हैं. अनबैलेंस टेंशन एसेंशियली मीन्स दैट के या तो ऊपर वाला ज़्यादा है या तो नीचे वाला ज़्यादा है. अगर if the upper tension is too tight, what will happen is that the bobbin thread will start looping over and नीचे ऐसे thread round ऐसे होने लगेंगे. If the upper tension is very loose, then there is a chance that the thread will pull towards the bottom layer, right? So we will always ensure that we have a balanced tension in both the sides. uh, let's come to the most common sewing problems that are there. Starting with, again a lot of you have already worked on machines and I'm pretty sure you have already faced a lot of the sewing problems, and through trial and error you possibly had got the solution of कैसे इसको ठीक करें. But again technically देखते हैं, if your needle thread is breaking too much, why is the needle thread breaking too much? It the first, whenever your needle thread is breaking too much, it essentially means first thing I have to check is that whether I have done the threading properly, have I followed the sequence properly. ठीक है. There is also a chance that the needle thread का tension is too tight. You might have to loosen it a bit. It can also mean that the needle is not installed correctly. The needle might be bent or it is blunt or it is, it doesn't have, it might, the tip might be broken. And
of course, the quality of thread. If the thread is of a bad quality, then there is a very high chance that the needle thread might break. Coming to the bobbin thread breaking, वेरी सिमिलर टेंशन के केस में ये ऑपोजिट है कि आपका बॉबिन का टेंशन बहुत ज़्यादा है, आपको थोड़ा वो लूज करना पड़ेगा. देर इज ऑल्सो अ चांस कि बॉबिन केस है, that has become very sharp, the edge has become very sharp and it is breaking the the thread, and maybe the bobbin is not wound, the winding of the bobbin is not done properly. A very common thing that I have seen over years that my students do is that they do not use the bobbin winder, and they tend to wind the bobbin through hand, ऐसे हाथ से लेके ऐसे ऐसे करके वाइंड करते हैं बॉबिन का थ्रेड. उससे क्या होता है, हमारे हाथ में देर इज नॉट अ यूनिफॉर्म प्रेशर, कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, कहीं पे बहुत कम प्रेशर हो जाता है, उसके चलते थ्रेड ब्रेक्स होते हैं. ठीक है. देयर कैन ऑल्सो बी स्किप्ड स्टिचेस. स्किप्ड स्टिचेस का क्या मतलब है, मान लो मेरा हर एक स्टिच का लेंथ इज 3 mm और 2 mm, कहीं कहीं पे एक 2 mm पे वो लॉक नहीं हुआ और वो 4 mm पे जाके वो लॉक हुआ. दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्किप्ड स्टिचेस. नाउ क्या रीज़न हो सकता है इसकी? द रीज़न फर्स्ट इज अगेन थ्रेडिंग सही से हुआ नहीं है. There can also be a chance that the needle installation is wrong. Uh, a very common cause can be that the pressure on the pressure foot is less. So we have to increase the pressure on the pressure foot. Again, if the needle is very fine for the fabric that you are using, it can also get a skip stitch because it's not penetrating the fabric properly. A damaged or a bent needle can also cause this. Uh, if we see loops on the top side of the wall, so we'll have two panels, एक ऊपर एक नीचे. अगर ऊपर के साइड हमें लूप्स दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बॉबिन थ्रेड में ठीक ठाक टेंशन नहीं है, कम टेंशन है, एंड ऊपर वाले में ज़्यादा टेंशन है, मिडिल थ्रेड में ज़्यादा टेंशन है. सो एग्जैक्टली अगर अंडर साइड में लूप्स है, दैट वुड बी एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ इट. इट मीन्स दैट द upper tension is loose and the bottom tension is very tight. Again, if the bobbin is again very too full, then this can also called loops or get loops on the underside of the wall. There can also be crowded stitches. Crowded stitches का क्या मतलब है? स्टिच बहुत पास हो जा रहा है, जितना हमने SPI सेट किया उतने में हुआ नहीं. इसका वेरी कॉमन रीजन इज दैट फैब्रिक ठीक ठाक मूव नहीं हो रहा है. सो प्रेशर फुट का बार हमारा ठीक से सेट किया हुआ नहीं है, प्रेशर फुट का प्रेशर सही नहीं है, फैब्रिक ठीक से मूव नहीं कर रहा है हमारा. ठीक है. देयर कैन ऑल्सो बी निडल ब्रेकिंग. निडल ब्रेकिंग का सबसे कॉमन रीजन कि हमने बहुत ज़्यादा फाइन नीडल ले लिया फॉर द फैब्रिक. बहुत फाइन नीडल ले लेंगे तो वो फैब्रिक में पियर्स नहीं कर पाएगा, फैब्रिक नीडल को तोड़ देगा. ठीक है. सोइंग ओवर हार्ड पार्ट्स, लाइक पिन के ऊपर आपने पिन कर रखा है और उसके ऊपर से आप स्टिच करने जा रहे हो, या बटन है या जिपर है उसके ऊपर से आप स्टिच करने जा रहे हो, उससे भी टूट सकता है. ठीक है. देयर कैन ऑल्सो बी द मटीरियल नॉट बीइंग फिटिंग प्रॉपर्ली. अगेन, प्रेशर फुट में प्रेशर नहीं है. स्टिच रेगुलेटर को चेक करो. स्टिच रेगुलेटर में मान लो किसी काफ़ी में होता नहीं है, बट किसी मशीन में 0 से स्टार्ट होता है, तो मेरे को वो 0 पे सेट है. ठीक है. एंड देन देयर इज पकरिंग ऑन बोथ द साइड्स. पकरिंग का वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजन इज कि निडल हमने बहुत मोटा ले लिया. जितना हमारा फैब्रिक के चलते जितना निडल लेना था उससे हमने मोटा ले लिया. अपर एंड लोअर टेंशन, अपर एंड बॉटम टेंशन दोनों हमारा is too tight. The needle again, the damaged needle can also cause this. Stitch lengths हम बहुत ज़्यादा ले लिए, वो भी हमें पकड़ने हो सकता है. ठीक है. So these are the most common sewing problems that are there. Is this part clear? Up to here, is it clear? Yes. Then move up, Yes. Yes, ma'am. move ahead to the the adjacent works and the corresponding works which helps us in making of a garment. Okay, let me just stop for a while. Just 2 minutes.
Okay, I hope the screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so coming back to this part, uh, so then we come to the part where we are calling this are the the associated activities that we use whenever we are making a garment. So one of the activities that is very important is called pressing. Okay, purpose क्या है? Basically to remove the first purpose of pressing. I think every one of us know it's to remove any creases that are there. It ensures कि whatever is the desired shape of the garment, जो भी हमें चाहिए, whatever is the desired shape, it you know mm, it it gives that desired shape to the garment. So for example, अगर हमें जैकेट बनाना है, जैकेट बहुत स्ट्रक्चर्ड गारमेंट है, वो स्ट्रक्चर उसको दे रहा है. अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा फुल लग रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लफी हो रखा है और उसको हमें बिठाना है, तो अगेन प्रेसिंग इज़ अ वेरी गुड आइडिया. इट गिव्स अगेन वेरी नीट एंड वेरी स्मूथ क्लीन अपीयरेंस. अगर आप शर्ट बना रहे हो एंड उसको बिना आयरन के बनाओगे तो इट विल लुक वेरी बैड. Any shapes in the garment, again, let's say talk about shirts. Collars generally have very fine crease points, right? If you do not, if you are if the points are not ironed properly, it will, if the collar is not ironed properly while making of the collar, you will never get that fine point. And of course the garment without pressing, it will look very untidy, very unattractive in a way. Uh, there are two types of pressing that is there. One is called under pressing. The second one is called top pressing. What is under pressing? Under pressing is essentially दो दो पार्ट में हम कभी भी प्रेसिंग करते हैं ना, जब हम गारमेंट बना रहे हैं कभी भी प्रेसिंग करते हैं, दो पार्ट में हम करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज अंडर प्रेसिंग. इट इज कैरिड आउट while the garment is being made. तो जब हम garment बना रहे हैं, during the process, in between one operation to the second operation, we when you press the fabric, we call that under pressing. ठीक है, so इससे क्या होता है basically, the next part becomes easier. So again, for example, let's say when we are making a collar, अगर हम collar press नहीं करेंगे बना के, फोल्ड करके और टर्न करके हम उसको प्रेस करके फिर वापस से नहीं बिठाएंगे, सो स्टिचिंग विद द बॉडी बिकम्स डिफिकल्ट. ठीक है, एनीबडी हु हैज एवर ट्राइड टू मेक अ गारमेंट विद अ कॉलर विल रियलाइज दिस. कॉलर को आपको बना के उसको उल्टा करके आपको प्रेस करना पड़ेगा, तभी आप उसको वापस से नेक लाइन पे जोड़ पाओगे. एंड फाइनली इज दैट टॉप प्रेसिंग. व्हाट इज टॉप प्रेसिंग? टॉप प्रेसिंग इज एसेंशियली व्हेन यू complete the garment and press it, right? It essentially means that your garment is now ready and you are ensuring that the entire garment, the final garment looks perfect. Okay, next comes the difference between. So हम ये दो वर्ड को ना बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. ठीक है, वी यूज आयनिंग या प्रेसिंग बहुत, एक की जगह दूसरा हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एन हॉट आयरन जिसको हम चला रहे हैं. बट देयर इज़ अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन. Ironing is basically done where you take the iron and you slide on the fabric to move, to smoothen the surface. Now, ironing is okay when you are doing it on a ready garment. What does it mean? It means कि आपके पास let's say एक कुर्ती बनी हुई है, आपने खरीदा है कहीं से, ये रेडीमेड है, it is stitched properly. So if you iron on that and you're sliding your iron on that garment, it is okay. Why is it okay? Because the garment is already stitched. When you are sliding it on a raw fabric जिसका साइड स्टिचिंग किया हुआ है नहीं, that fabric will stretch, right? And because the fabric will stretch, we cannot really iron it. In that case, what we should do is pressing. What does it mean? You're taking the iron and with the heat on, you're pressing it at different parts, different areas में जाके आप उसको press कर रहे हो. ठीक है,
इसका मतलब क्या होगा कि आप बस उस हीट से, उस हीट के प्रेशर से आप उसकी क्रीजेस को हटा रहे हो. यू आर नॉट स्लाइडिंग इट. Whenever you, please remember, whenever you slide on a unstitched fabric, it will stretch. So never slide on it. You are just pressing it at, with placing the iron at different positions. Okay. So you know, at this day, you should always remember that you should always press and never iron. The temperature setting is very important. The kind of fabric will decide. I'll show you certain differences, but the kind of fabric will decide कि आप किस साइड में आयरन करोगे. ऑल्सो yesterday we were talking about the grain line, right? हम ग्रेन और क्रॉस ग्रेन के बारे में बात कर रहे थे, याद है? Yes, ma'am. यस मैम। स्ट्रेचेबिलिटी कौन से साइड में होता है? ग्रेन के साइड पे, ग्रेन के लेंथ पे होता है या क्रॉस में होता है? क्रॉस में। क्रॉस में क्रॉस, होता है मैम। क्रॉस में होता है. परफेक्ट. सो क्योंकि क्रॉस में होता है, हम कभी भी जब आयरनिंग करेंगे, हम कभी भी उसको क्रॉस साइड में नहीं करेंगे. ठीक है, वी विल ऑलवेज प्रेस अलोंग द लेंथ ऑफ द फैब्रिक. ठीक है, बिकॉज अगर हम क्रॉस ग्रेन में हम आयरन करेंगे, इट विल always stretch the fabric. So always ensure that you press on the length of the fabric on the line of the grain to the parallel to the selvage and not on the other side. Uh, if you're using steam, let's say, ensure that whatever moisture is there, that is dried off before you move to the next one, because if it is not dried, it will leave back a watermark or a stain. ठीक है. सीम्स या डार्ट्स को आपको अच्छे से प्रेस करना है. आई विल शो हाउ टू प्रेस सीम्स एंड डार्ट्स. कोई भी टॉप स्टिचिंग हो, उसको पलट के हमेशा टॉप से आयरन करो ताकि इट गिव्स अ वेरी क्लीन लुक. अगेन ट्राई करो हमेशा टू, हमेशा तो हो नहीं पाता है, बट एटलीस्ट एज मच एज पॉसिबल टू प्रेस ऑन द रॉन्ग साइड, बिकॉज एट टाइम्स राइट साइड में आयरन करने से ना, इट गिव्स अ very shiny mark which we possibly do not want. So irons are basically two types. Again, हमारे industrial irons तो है ही, but otherwise what you domestically have generally of two types. One is a plain or a dry iron जिसमें आप बस heat होता है जो आप plug in करते हो and it just heats up. And then there is a steam electric iron which is again when you plug up, you can also pour in some water and it can give you some hot steam, right? Now there are certain things again, like हम needle जब हम choose करते हैं, तब जैसे हम पहले ये देखते हैं कि फैब्रिक कैसा है. अगेन जब हम आयनिंग करें, जब हम प्रेसिंग करेंगे, आयन से पहले आई हैव टू इंश्योर टू सी what are these issues that might happen. So for example, fabric, does the fabric shine very much? If अगर हम heat देते हैं, is there a chance that the fabric might shine too much? जैसे a lot of suiting fabrics shine when you press on it. So we have to ensure कि हम ज़्यादा pressure ना दें, बहुत ज़्यादा heat ना दें. So ensure to, so that the fabric doesn't shine. Does the fabric melt? What do I mean by that? A lot of synthetic fabrics like polyester, nylon, बहुत ज़्यादा heat देंगे तो melt कर जाएगा. तो हमें heat समझ के देना है. फैब्रिक का watermarks है क्या? So what do I mean by that? कि when you give steam to the fabric, does it leaving a outline? So in that cases, we would rather not use steam. Again, if the fabric has a tendency to shrink, जैसे लिनेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम मॉइस्चर दे देंगे, बहुत ज़्यादा स्टीम दे देंगे, there's a tendency that it will shrink. Also, the folded edge, is it showing any impression? Very commonly seen in again trousers. अगर trouser का seam जहाँ पे बहुत मोटा होता है, and if you press upon it, then it starts showing a very clear, shine line. तो उसके केस में क्या करेंगे, या तो हम प्रेशर कम करेंगे, नहीं तो वी यूज द अदर साइड ऑफ द फैब्रिक.
And finally, does the fabric require any special equipment? So for example, जैसे पाइल फैब्रिक होते हैं, जैसे द फैब्रिक्स लाइक फ्लीसेस, जो कि जैकेट के अंदर, विंटर हुडीज के अंदर लगते हैं, वैसे केसेस में you should always either use the, iron the, press the other side, the wrong side of the fabric, or we use something called a needle board, so that the pile doesn't flatten, वो एकदम फ्लैट ना हो जाए. ठीक है. Now this is what I was talking about. Whenever we are ironing, it is very important how to do this pressing, right? तो जैसे हमारा सेंटर बैक और सेंटर फ्रंट सीम, कल हम सेंटर बैक और सेंटर फ्रंट के बारे में बात करते हैं. सो अगर हमारा सेंटर बैक और सेंटर फ्रंट सीम है, तो उसको हम ओपन करके आयन करेंगे. सीम को ऐसे ओपन करेंगे और फिर उसके ऊपर से आयन करेंगे. ठीक है. साइड सीम को या तो हम ओपन करके आयन करेंगे, नहीं तो बैक की तरफ रख के फिर आयन करेंगे. साइड सीम का जितना वर्क है वो बैक की तरफ चला जाना चाहिए. शोल्डर सीम अगेन या तो ओपन रहेगा, नहीं तो बैक की तरफ रहेगा. ठीक है. पैनल और वर्टिकल सीम्स, ये कौन से है? ये जैसे मान लो ऐसे पूरा एक सीम जा रहा है फ्रॉम शोल्डर टू द बॉटम, ठीक है, जिसको हम प्रिंसेस लाइन सीम्स बोलते हैं. वैसे केसेस में या तो अगेन ओपन रहेगा, अगर ओपन रख सकते हैं. अगर बहुत कर्व है वो सीम, अगर वो ओपन नहीं हो पा रहा है, तो हम साइड सीम की तरफ कर देंगे उसे. हॉराइजेंटल सीम्स, हमेशा हम जहाँ पे भी हॉराइजेंटल सीम्स है, जैसे ऐसे स्ट्रेट सीम्स है, वैसे केस में अगेन ट्राई करेंगे ओपन रखने का. नहीं हो पा रहा है तो हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे. इसमें बस एक एक्सेप्शन है. इसका एक्सेप्शन है कि अगर वेस्ट में कोई सीम होता है, जैसे एक ड्रेस है जो जिसका बॉडी और स्कर्ट एक साथ जुड़ा हुआ है, अगर वेस्ट है तो उसका सीम रहेगा ऊपर की तरफ, बाकी हर जगह पे हमारे सीम्स नीचे की तरफ रहेंगे. नेक्स्ट है हमारे वर्टिकल डार्ट्स, जो ऐसे सीधे डार्ट्स होते हैं. ठीक है. उसके अगेन साइड सीम की तरफ रहेगा हमारा सीम. डाउनवर्ड डार्ट्स का रहेगा टुवर्ड्स हेम. तो अगर डार्ट सीधा है, ऐसे स्ट्रेट है, तो फिर ऐसे हम फोल्ड करेंगे ताकि उसका बल्क नीचे रहे. ठीक है. गैदर्स हम सीधा कभी भी आयन नहीं करेंगे. गैदर्स को हम हमेशा ट्राई करेंगे फ्लिप करके आयन करने के लिए, या गैदर के नीचे तक आयन करने के लिए, नहीं तो वो फ्लैटन हो जाएगा. ठीक है. ये क्लियर है सबको? Yes. Okay. Now, coming to, as I was saying, कि depending on the fabric, our pressing needs change. So क्या क्या टाइप के फैब्रिक्स हो सकते हैं? We can have cottons. Cottons is possibly the easiest to press. एकदम बहुत हाई हीट आयन चाहिए हमें, हम मॉइस्चर यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, स्टीम आयन यूज़ कर सकते हैं, और एकदम बहुत क्रिस्प वे में वो आयन हो जाता है. लिनेन्स में प्रॉब्लम है, इफ़ यू यूज टू मच ऑफ मॉइस्चर दे कैन श्रिंक. So we have to be very careful when you are ironing the linen fabric. Silk tend to be very clingy, right? So it's a very fine quality fabric and we should not use very high heat. Moisture भी हमें थोड़ा बहुत कम सोच के ही यूज करना चाहिए, बिकॉज अगेन सिल्क हैज अ टेंडेंसी टू लीव वाटर मार्क्स. सिंथेटिक फैब्रिक्स, एसेंशियली सिंथेटिक फैब्रिक्स जैसे पॉलिएस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, ये सारे फैब्रिक्स में हम कूल आयरन यूज़ करें तभी अच्छा है. हम उसमें बस प्रेस करें, ज़्यादा हीट ना डालें एंड मॉइस्चर भी ना डालें. फाइनली वी हैव लाइट वेट वुलन. अगेन मॉडरेट हॉट आयरन हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं यूज़ करेंगे. पाइल फैब्रिक्स अगेन फ्लीस जैसे फैब्रिक फ्लिप करेंगे और उल्टे साइड में आयन करेंगे, सीधे साइड में हम कभी भी आयन नहीं करेंगे. Now, when we have seams, seams are essentially, uh, can be very bulky. We use those seam allowances, and at times when we make the seams, I'll talk about the seam types today. So I'll show you a few of the seam types. It is very important that we do not have much seams. Now,
Why is it important? First is that uh, a bulkier seam will not give you a very nice fitted look. अगर गारमेंट बहुत ज़्यादा फिटेड है तो ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे से यू नो उसका उसका बल्क को हटाए, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको जितना कम हो सके उतना कम रखे। एंड दूसरा कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स जो है उसको भी कैरी करने में इजी हो जाता है। तो हम 3 चीज़ें जनरली कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ट्रिमिंग, जितना भी आपका सीम अलाउंस है, एक्स्ट्रा जितना बच रहा है उसको आप ट्रिम कर दो। सेकंड हम बोलते हैं स्लैशेस और क्लिपिंग। स्लैशेस और क्लिपिंग क्या होता है, अगर हमें कर्व पे स्टिच करना है, मान लो ऐसे कर्व पे आपको स्टिच करना है बस्ट के अराउंड, वेस्ट के अराउंड, तो हम छोटे-छोटे स्लैशेस बनाते हैं, छोटे-छोटे क्लिपिंग्स बना देते हैं। उससे क्या होता है, अब जब कर्व करते हो वो आराम से वो खुल के बैठ सकता है, बिकॉज़ आपको एट द एंड ऑफ द डे उसको ओपन करके प्रेस भी करना है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ द नॉचिंग। नॉचिंग इज़ अगर हमें आउटवर्ड कर्व बनाना है, एक तो हमारा ऐसे कर्व हो गया, ऐसे हमें स्टिच करना है, एक हमारा ऐसे कर्व हो गया और जो ऐसे टर्न होके बाहर की तरफ टर्न रहेगा। इन दोज़ केसेस व्हाट वी डू इज़ अ नॉचिंग व्हेरेइन we make the slashes smaller. Now, there can be certain special seams. For example, we have bias seams. Bias seams is where the fabric is on a 45 degree, and we are taking a extra piece of fabric and stitching it. Uh, I just see if I have a nice seam to show you. So, can you see this? Is everybody able to see this? Yes, ma'am. So this is basically a bias seam. Okay. So the fabric is there is there are these are the two fabrics which are stitched together in the center, and then the raw edge is enclosed with a extra bias. एक diagonally कटा हुआ fabric से इसको seal किया हुआ है. Can you see this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is called a bias bound seam. Okay. नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो हैव अ कर्व्ड सीम। कर्व्ड सीम्स अगेन जैसे अब हमने कहा कि जैसे अगर हम प्रिंसेस लाइंस बना रहे हैं या हम साइड सीम बहुत हमारा शेप्ड है, वेरी कर्वी समबडी, तो उसके केस में वी यूज कर्व सीम्स। गैदर सीम्स आर वेयर वी आर यूजिंग गैदरिंग। आपको पता है आई होप, जैसे मान लो पफ ब्लाउजेस होते हैं, पफ स्लीव वाले ब्लाउजेस होते हैं, या यहाँ पे बहुत सारा पफिंग होता है, या स्कर्ट में बहुत सारा गैदर होता है। आई थिंक एवरीबडी हैज सीन इट। Yes, ma'am. मैम ठीक है, तो गैदरिंग टाइप के भी सीम हो सकते हैं हमारे। फाइनली वी हैव अ कॉर्नर सीम विच इज जनरली अगेन जैसे कॉलर के एंड्स हो गए या जो भी है। कॉर्नर सीम में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एसपीआई थोड़ा ज़्यादा रखने हैं, विच मीन्स smaller stitches, ठीक है, as much as stitches per inch as possible, so as small stitch as possible we will those as those stitches smaller, and essentially ensuring कि हमारा फैब्रिक मूव ना हो, ताकि वो एकदम शार्प एक क्रीज लाइन बने हमारा। We can also stitch darts. Now, darts, I think everybody have already made. A lot of you have already have an interest in stitching. So basically, dart help us to convert a 2D flat surface to a 3D garment, and it can be of two type. It can be a single pointed dart, जैसे हमारे bodices में होते हैं, shoulder dart हो गया, waist dart हो गया, स्कर्ट में होते हैं, और हमारे डबल पॉइंटेड डार्ट्स भी हो सकते हैं जो कि दोनों साइड्स होते हैं, लुक्स लाइक अ बर्फी ऑलमोस्ट, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ फिश डार्ट बिकॉज इट ऑल्सो resembles a shape of a fish. वेरी कॉमनली यूज्ड इन आवर कुर्तीज़। हमारे जो ड्रेसेस होते हैं, कुर्तीज़ होते हैं, जैकेट्स होते हैं, उसमें हम बहुत कॉमनली डबल पॉइंटेड डार्ट्स यूज़ करते हैं। नाउ जब भी हम डार्ट स्टिच कर रहे हैं कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। डार्ट का जो हमारा मार्किंग है ऑलवेज
convert, always transfer the marking on the wrong side of the fabric. We should always take the right side together and stitch on the wrong side. हमारे डार्ट के स्टिचेस कहीं पे भी राइट साइड में नहीं आने चाहिए. अ, जो भी डार्ट का पॉइंट है वहाँ पे हमें एक पिन रख के स्टिच करना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम डार्ट पॉइंट से आगे चले जा रहे हैं या डार्ट पॉइंट के पहले ख़त्म कर दे रहे हैं. Wherever is the dart point, we should use a back tag there so that it seals at the dart point. And we have to, uh, you know, ensure that कि there is no puckering. Because हम जब वहाँ पे एंड में जाके बैक टैग करेंगे ना, it can cause puckering. So we have to be very careful that we are not, you know, that there is no puckering happening at the end of the dart point. ठीक है. And whenever there is a bulky dart, let's say you are working with a woman who is very curvy, who's the difference between the bust girth and the waist girth is very high, right? So in that case, in those cases आपके डार्ट के बल्क बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. इन those cases we trim it. हम डार्ट का एंड को हम ट्रिम करके उसको हम फिनिश कर देते हैं. अंदर से आप एक बाइस पाउंड दे सकते हो या कुछ भी एक करके आप उसको फिनिश कर सकते हो. ठीक है. For the in case of double dart, again it's called, as I said, it's called a fish dart. And as I said here, again every dart points have to be done on the you know the wrong side. The only thing is that in the widest part of the double pointed dart, जहाँ पे दोनों साइड में दो points हैं बीच में, so the widest part which is at the center, at times we mark some slashes. If the dart is very bulky, we give some slashes so that it falls comfortably around the body. We should always ensure that whenever we are pressing the dart is you know rest in one side of the body. And whatever darts you have, अगर vertical है तो साइड से की तरफ, अगर horizontal है तो नीचे की तरफ. Next comes the what is the fabric that we are selecting. Now there are few things that we have to be very careful about, that अभी तक हमने ये समझ में आ रहा है हमें. So yesterday also when I was talking about reaping, we essentially spoke about if it's a if my final garment is going to be something which is done on chiffon or georgette, I have to use a lightweight muslin. If it is something which is like a jacket, I have to use a heavyweight muslin. So depending on what fabric you are using, a lot of things change. Our needle is changing, our thread is changing, our for that matter, our seam type will also change. As I'll show you in the next few slides, you'll see the seam type will also change according to the type of fabric and of course the type of garment or which position of garment we are talking about. Next, we do the preparation of the fabric. How do we generally do? We generally, tear it. थोड़ा सा एक काटते हैं, एक थ्रेड निकाल देते हैं, देन वी कट आउट अ ब्लॉक, राइट. This is something I was talking about yesterday also. Uh, so there are different markers through which we create the we cut our fabrics. You remember I was talking about how it is cut in the industry, where multiple layers of fabric is being spread, and it can be up to 30, 40, 50 layers, and then we cut the cut the final garment. Now it is important to understand that there can be an open layout, there can be a folded layout. Now, what do I exactly mean by open layout or folded layout? Is that basically an open layout is where the fabric is completely spread. A folded layout is wherein we are folding it either selvage to selvage or in half. What is the basic difference? If we're folding it in half, along the length, it essentially means that if I cut it once, I'll get two set of garments. ठीक है. अगर मैं एक बार काटूँ, एक शर्ट के सारे कंपोनेंट्स को एक बार काटूँ, तो मुझे दो शर्ट के
कंपोनेंट्स मिल जा सकते हैं। अगर लेंथ वाइज हम फोल्ड करते हैं, तो मान लो अगर हमारे बैक इज ऑन फोल्ड, द बैक इज अ कंटिन्यूअस पैटर्न और ऑन फोल्ड है, तो फिर हम बैक को उस फोल्ड में रख के काटेंगे और बाकी को हम आधा आधा काटेंगे। तो एक फ्रंट काटेंगे जिससे दो फ्रंट हो जाएगा, एक स्लीव काटेंगे तो दो स्लीव हो जाएगा। कफ अगर है तो कफ के चार लेयर होते हैं, तो कफ को दो बार काटेंगे तो चार लेयर मिल जाएगा। एंड बैक को हम उस फोल्ड लाइन पे काटेंगे ताकि खुलने से पूरा बैक हो जाए। डिड आई मेक माई सेल्फ क्लियर ऑन दिस? यस मैम। ये समझ में आया सबको? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. Next we do marking and cutting. Marking is essentially done either by fabric pens or pencils that I was speaking about yesterday. You can also do it with a tailor chalk. Uh, and then finally the cutting is done. Cutting. If it is lesser layers, it can be done by scissor. If it has more layers, then it has to be done by the cutting machines that are industrial cutting machines that are there. Uh, Now, what are the factors that affect the choice of seam? I'll show you different types of seams today. So, what are the different, you know, what are the factors that are important here? The first is again the type and the weight of the fabric. You know, what sort of fabric am I using? Am I using very lightweight fabric, or am I using very sheer fabric or an opaque fabric? For example, if the fabric is a very lightweight or a sheer fabric, I have to use a very strong seam, right? Because if you do not do that, the threads will gradually come out. If I am using a heavier weight fabric, then there are certain seams which possibly cannot be made. I can possibly only make an open seam. The type of garment also decide what seam to be made. For example, if it is an inner wear, I have to make a seam which is not bulky, which uses minimal seam allowance. If it is a kurti, then possibly I can use better, more seam allowance on it. Also, you might have seen in shorts and other, shorts basically, the side seams are very different. In jeans, the inseams are very different, right? Then again we have the seam position. Where is the seam placed? For example, if the garment is a lining, अगर garment में lining डला हुआ है, तो फिर मे बी हम उसको रॉयड छोड़ सकते हैं, सीम डाल के अंदर रॉयड छोड़ सकते हैं। बट अगर लाइनिंग नहीं है, तब हमें उसको फिनिश करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको 22 बाउंडिंग का दिखाया। ठीक है, we are at the very end of our session. Uh, so these are certain seam types, and this is the fabric on which we should use the seam types. And finally, what is the use of it? So let me, as I'm showing you one by one, let me show you the seams. We take out one seam at a time. The first one that we see is a plain seam, right? And all the seams can be made by your cyclical lock stitch machine. This is a plain seam. दो fabric है. I hope you can see the screen and you can identify that there are two fabrics. यस मैम। So these are the two fabrics, and this is how the seam is being done. ठीक है, ये ऐसा एक लाइन स्टिच कर दिया गया है। ठीक है, and this is the raw edge. You can see ये वाला side raw ही है अभी। Now, where can we use seams like this? This is called a plain seam. Now, where can we use it? We can use it on fabrics wherein which generally doesn't fray. For example, we can use it on leather goods. Leather तो फ्रे होता नहीं है, रेगजीन, ये सारी चीज़ें फ्रे नहीं होती, एक स्टिच से हमारा काम बन सकता है. We can also use it on fabrics which are very thick in nature, which you know, which for example, if I'm working on canvas and I zigzag cut the states, thread in a zigzag way,
that can also happen. Now see, uh, both of these are plain seams. This is also a plain seam. This is also a plain seam. Can you see this too? Yes, ma'am. But there is a Yes, ma'am. difference between these two. In this one, the bulk of the raw, the seam is pressed on one side. एक साइड में लेके इसको प्रेस किया हुआ है. Very important when we are talking about horizontal seams. अगर हमें ऐसे रख के काम करना है, you have to ensure कि ये नीचे की तरफ रहे, right? This would be the right side of the fabric. तो ये नीचे की तरफ रहेगा सीम, तो बल्क इसका नीचे की तरफ है, seam allowance. However, in this one, see, it is pressed open. This is what I was talking about when you press open the seam. So we will try to do this if the seam is vertical. ठीक है? Just give me a moment. Next, we have something which we call a turn and stitch. Uh, mm, what is a turn and stitch? Right? It is something which is used for our fine to medium फैब्रिक्स. सो हमारे प्लेन सीम का जो एज है वो तो रॉ रह गया, उसको हम अगर एक टर्न करके स्टिच करते, दैट्स व्हाट वी कॉल अ turn and stitch edge. And generally, it's good for garments which are, mm, which has already, for example, if you can see, uses it's done on a straight seam, so it already has a straight seam. You just turn and stitch it so that it ensures that the raw edge doesn't come out. ठीक है? वाइस बाउंड मैंने आपको ऑलरेडी एक बार दिखाया, फिर भी आई शो यू वंस मोर. सो दिस इज द वाइस बाउंड. I will show in the next class how each of the seams are made. I will show with diagrams. Uh, then we have an overlock seam. Okay. So what is an overlock seam? You see, this is an overlock seam. Okay. Can you see this stitch? Yes, ma'am. Okay, this is called an overlock seam. This is generally done on an overlock machine. There are different machines for that. We can, you know, have 3-thread overlock. We have 4-thread, 5-thread overlock, depending on depending on what where the seam is positioned. We can decide how many thread we want it. It can be done on most of the fabrics. However, it gives a very cheap finish. Again, if you're working with a more expensive client or somebody who would like to pay you more, it is always a better idea not to use overlock seams. Okay. Next is a French seam. It is often done on blouses. Uh, all those women's wear dresses, children's wear. Uh, this is how a French seam looks like. So from the front it looks like this, from the back it looks like this, and it is possibly one of the nicest finished seams. The reason being, you see that there is absolutely no raw edge, right? And a variation of French seam is also there. Let me just show you that. It's called a mock French seam. Okay, how does a mock French seam look like? So from the front, a mock French seam would look like this. However, from the back, let's look at the difference between these two. In a French seam, you have just one stitch visible on the wrong side. On the wrong side of the fabric, you just have one stitch visible. On a mock French, you have two stitch lines visible. Right? On the wrong side, you have two stitch lines visible. Yes? So again, next class I'll show you the seam diagram of both the seams. But both of the seams, the mock French and the French seam, are the seams which are used in premium
women's wear and children's wear, and it gives one of the best looking and nice looking fall of the garment. This is a flatten fell or lap and fells. You see this? This is how it looks from both the sides. There are two stitches, both on the. This is the right side of the fabric. It has two stitches, and the fabric moves like this. This is very commonly used in our in the the seams of our shorts. So if you have seen shorts, there is one seam which runs from exactly from the sleeve bottom to the side till the hemline. I hope you have seen that. It is also used in the Yes, ma'am. inseams of our jeans, denim jeans के inseam में भी यही seam use होता है. And then there is also welt seam. Welt seam is essentially again used on a number of skirts or bottom wear mostly or jackets, and it is essentially I don't think I have a welt seam sample, but and welt seam is essentially made whenever we are talking about pockets or let's say trousers के back pockets में जो seams होते हैं, and it is generally done on fabrics which are of higher heavier weight, which are not easy to stitch, all those fabrics, right? uh, yes, I think we are done with the session today. If there are any questions, I would like to answer now. There are no questions. No, ma'am. Okay, in that case, you might want to go through the the sessions uh, again, the content ones. Uh, did you find the practical workbook? It should be there in the link itself. It should be there with the the sewing. It should be a continuation of the sewing or the block two. Yes, ma'am. Okay. So Alika Ma'am. found it. I hope the rest of you also did. So please keep those things handy. I hope you would start working on the first assignment that I have asked you to. But this part, I'm not giving you any assignment. Once we start on the demonstration, that's where your the second part of the assignment would start, wherein you would actually and practically would make certain things. And yes, then we meet again on Thursday at 2 p.m. And एक्सक्यूज मी मैम yes, Nikita. मैम प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है वो हमारी बुक में है जिस ब्लॉक 2 के बाद जैसे कि बेटा आप sorry, I think I got disconnected. Sorry, Nikita. So I was saying that you are most welcome to complete all the exercises in your uh, workbook. However, uh, can you hear me? Sorry, I think यस मैम I got disconnected. यस मैम Okay, so I was saying that you're most welcome to do all the things that is there in your workbook, but then there would be certain specific assignments which you would be asked to complete and submit, right? Submit for your evaluation. So let me just give you my email ID. You do not have to send anything right now. So this is my email ID. Uh, I have given it in the messages of the Google Meet. I hope everybody have received it. Uh, uh,
Whatever assignments I will give you, you will have to send it by a specific date to my email ID, and I'll tell you what to do in the next class. Is that okay? Yes, ma'am. Yes. Okay, then I think we can call it a day, and we meet again on Thursday. Yes. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. You have joined the call. There is one other person in the call. Your camera is on. Your microphone is on. Your hand is lowered. This call is open to anyone. This call is being recorded. Button collapsed. Class 11 will receive the